زیادہ انہوں نے تنگ کیا, میری ٹیم نے انہیں بہت تنگ کیا. تو وی آر سر ویری گریٹفل. جب بھی ہم آپ کو کال ملاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں, رسپونڈ کر دیتے ہیں. چیئرمین صاحب کا شکریہ. میں ایم او سی سی آلسو ونڈرفل ورک گرین بلڈنگ بورڈ کی طرف سے we have done some good progress. So the whole idea is how to build it forward and develop these things. So I think organizationally our team claim this is a big success for all of us. That 5%, 10% ہر سال نہیں گا. اگر انرجی کنزرویشن کی بیس کے اوپر بننی شروع ہو گئی تو we can see by 2030 there will be lot more. Because آباد کے ساتھ ہماری کراچی میں بات ہو رہی تھی تو they said کہ ہمارا ابھی بھی 12 million houses are needed across the country. So imagine like 12 million houses, what we can save out of them. And if we are not going to save energy, ہم نے اگر دیواریں ہی ٹھنڈی کرنی, how much energy which we will use, how much like money we will be wasting in that. So I think 12 million and then اس کو multiply کر کے جو بھی نمبر نکال, that will be going into some other areas and that will part of this economy as well. So I think that is a very very important thing کہ organizations جو بڑے آباد type لوگ بھی who are actually builders, they are also very much serious with this first اسٹیٹ کی انرجی آڈٹ کیا جائے ان کے کراچی آفس and then اس کو انرجی ایفیشینٹ کیا جائے. And we are already in discussion with them. So you can imagine slowly this is picking up. And I think future کے اندر بھی we have some ideas کہ جی کس طرح even اگر آپ کی we will be bringing these new mechanisms in کہ کس طرح جو نئی بلڈنگز ہیں اس کے اوپر اور پرانی کے اوپر we can work on that. And I think lastly سب سے important aspect جو ہم بلڈ کر رہے ہیں ہماری انرجی کنزرویشن فنڈ کی ٹیم which is already actively working on it, like how we can develop this energy service companies and then developing system around it that we will enable financing. So currently there are very good discussions going on, and I think we also had a discussion with CBA coming up with some new financing windows, financing models کہ جس کے ساتھ ہم اس کو پروسیس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. I think اسی کے اسپیکٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ فنڈس, ابھی اگر آپ نے ریسنٹلی سنا ہو تو MH نامی کمپنی ہے, دے لانچ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ فنڈ اینڈ IPO تھا انیشیل آفرنگ تھی, اٹ سولڈ مور دین وٹ واز سبسکرائبڈ اینڈ دیٹ واز اے بگ سکسیس ایز ویل. سو وی ارلیئر ہیڈ ورکڈ ود MH اینڈ really good input coming out of them. So real estate ایک all together NIC incubators and innovations کرتے ہیں. I can tell you the real estate is also changing. It's being tokenized, it's being financed in a very different way. Earlier آپ leads property own کرتے تھے, now you are owning just a unit of it. And how the innovation is possible in that means there are so many things that can be done. So I think moving forward with the incubators, with the innovation, with the fintech, with the into the real estate, and we can bring a major changes in energy efficiency and the sector in the country. Thank you very much. Now proceed with the session. I'll outline the session criteria. So basically we will be discussing a short presentation on energy conservation building code, and then we'll be moving on towards the panel discussions, and in the end we'll have some question and answer session with the audience. So let's begin the presentation. So energy conservation building code is a regulatory framework within Pakistan to optimize the building energy efficiency and ensure that the building currently operates under sustainable measures. This means that we have to reduce the energy consumption patterns of buildings, and the code provides us the guidelines towards enhancing the energy efficiency of the buildings. So this code was officially launched by Federal Cabinet on 9th August 2024 via a SRO notification mentioned over here. So basically previously
in Pakistan there was a trend of utilizing other certification mechanisms like LEED or EDGE certifications, and there was before we highlight the importance of ECBC, it is noteworthy to mention that the annual growth rate of Pakistan, as per the source study, is 38 million houses annually. This means that 10,000 housing societies are currently in the process of developing house on annual basis. So this highlights how much important it is that the buildings need to be optimized as per the code guidelines. Presently, no one follows any efficiency measures within the buildings. Some of the potential issues within the building sector includes the improper maintenance of building appliances. There is improper insulation within the building sector. No one knows how to insulate the buildings, how to make their buildings airtight so that no air can enter or leave the house. Secondly, we have inefficient old buildings. Also, we have inefficient appliances. Presently, Nika is in the process of developing star rating appliances. So people will be able to know that how much energy will be consumed by particular appliances and how they can make their buildings more energy efficient. Alongside with this, there are inefficient building design and orientation. No one takes control of the window to wall ratio, which is a very important aspect within the building set. With different aspects, this includes the city size, which is primarily areas can travel within the city. With minimal pollution or fuel consumption. There is another strategy towards the vertical development to make the footprint as low as possible. Similarly, we have another aspect to address this concern. It is related to the building orientation. ECBC provides the guidelines how you can orient your building, how you can ensure that the window to wall ratio within the building is under consideration. There are specific values defined within the code which you can ensure while designing your buildings. So architect ECBC also ensures that the retrofitting within the building can also be done by these. Assalamualaikum everyone. मेरा नाम डॉक्टर फरूक भट्टी है. I'm the co-founder and CEO of Innovative Technologies, and we are also trying to help in the energy conservation side of the buildings. आज की जो panel discussion है, it's going to be an interactive dialogue. We have a few distinguished panelists with us, but after some initial exchange of thoughts, the floor will open for the house, and you're more than welcome to share in your comments and raise any questions also. So, in Pakistan, around 52% of the grid energy is utilized by buildings, and in summers, the peak electricity demand reaches around 30,000 megawatts, which is a lot. Another alarming statistic is that in the urban centers, because of the dense urban structures, metal roads, electrical appliance usage, air conditioning and so on, the average temperatures, they rise by 7 degrees Celsius compared to the rural settings. So this statistic alone is very alarming, and it's high time that we start working on the energy conservation measures. اور میں اپنی طرف سے بالخصوص نیکا کا جو ECBC کا ایفرٹ ہے آئی گریٹلی اپریشیٹ اینڈ لاٹ دم. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے اس میں آف کورس ہم کسی کانکریٹ سولوشن تک تو نہیں پہنچ پائیں گے, بٹ وی ول بی ایبل ٹو ایکسچینج لاٹ آف آئیڈیاز اینڈ ہوپ فلی وی ول بی ویل انفارمڈ ایز کمپیئر ٹو ویئر وی اسٹارٹ. سو ود دس آئی ووڈ ریکویسٹ دی ورتھی پینلسٹ مسٹر خالد حفیظ, ممبر پلاننگ CDA. تھینک یو سر فار کمنگ. پلیز. Architect Fawad Suhail Saab, he is the President, Institute of Architects, Pakistan, IAP. Mr. Muhammad Riaz Beg Sahab, he is a Senior Engineer with the F&D Consulting. Ms. Noreen Ghaffar, she is the Business Development and PR Partner at Stream Engineering Systems and Distributor for Privet. So she's been working in the HVAC industry for a while. Azim Khoso Saab, are you around? Yes, we are very good. Acha. Azim Khoso Saab has joined us from Ministry of Climate Change, and you're looking after the urban affairs.
Thank you for joining. Now we have many worthy fellows who joined us. Therefore, I would say that this entire audience is an extension of this panel. So we would quickly start into an interactive dialogue. खालिद हफीज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ECDC document is a very extensive document that has been described quite elaborately in the presentation. So, as we come towards the enforcement part or the implementation of this document, we in general are aware that in a country like Pakistan, construction जो है बहुत overall एक haphazard तरीके से होती है और energy conservation को बहुत ज़्यादा या consideration में नहीं लाया जाता in the initial construction or phase में especially. तो अब as we are going towards the implementation side of it, तो उसमें what practical challenges do you foresee for CDA कि आप इस चीज़ को कैसे effectively implement करवाएंगे, एक तो for the new constructions that are going to happen and also secondly जो existing constructions हैं उनको कैसे आप इसके फोल्ड में लेके आएंगे. दोनों ही करेंगे, एक रिकॉर्डिंग के लिए और एक सुनाने के लिए. ने बड़ी बयान की हैं. मैं सिर्फ आपकी इंस्टॉलेशन का जवाब देना चाहूँगा. बाकी दुनिया में इंस्टॉलेशन विंडोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स are UL listed, approved. So the energy labeling is there. So we know what we are buying. Installation की बात भी होगी तो बाकायदा उसके ऊपर लेबल लगा होगा, या R16 है या R15 है या R10 है. Unfortunately in Pakistan we don't have anything like this. हमारे PQSA पता नहीं, मतलब I don't know about this. लेकिन मार्केट में मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी एनर्जी लेबलिंग डॉक्टर सरदार साहब ने कोई लेबलिंग MEP लेबलिंग शुरू की है विद द हेल्प ऑफ PQSA. डॉक्टर साहब जी. तो अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में जिस तरह बाकी दुनिया में काम हो रहे हैं उस तरह हमारे मुल्क में भी वैसे ही काम हो. इंडिया में बाकायदा अगर अमेरिका में UL लैब है तो इंडिया की अपनी लैब है. Time is running out. I mean, we can continue the conversation, but just ऑटोमेटिकली बंद हो गया. आपको मैं सबसे पास होना था कि Hello. The CD is not only a development organization, but it also a regulatory authority and enforcement authority as well. We make regulations, we make laws, and we make building laws as well, and we later on enforce these laws to get them implemented. I have been in CAW department before joining CDA. So I was personally involved in construction all around Punjab. मैंने मुल्तान में वर्क किया हुआ है, मैंने फैसलाबाद में वर्क किया हुआ है, सरगोदा में काम किया हुआ है, लाहौर में काम किया हुआ है. फिर जब ईगा ने काम शुरू किए थे तो मैंने नॉर्थन एरियाज का भी एक्सपीरियंस किया. हैविंग दिस सेड, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन होती रही है, वहाँ के जो प्रॉब्लम रहे हैं, जो डिज़ाइन में हमें कुछ कमी नज़र आती रही है, आई थॉट कि कोई टाइम आए कि मैं उनको बेहतर कर सकूँ. और फिर जब मैं इधर CDA में आया तो हमने पहले मैं आई वॉज इंजीनियरिंग, CDA की जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको भी देखा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को देखा, नॉर्म्स को भी देखा कि जो हमारे लोग कॉन्ट्रैक्टर CDA पे काम कर रहे हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं और उनको जो फैसिलिटेट कर रहे हैं बैक एंड में से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मटीरियल सप्लायर्स हैं, फिर उनको भी मैंने बड़े गौर से बड़ी करीब से देखा है.
देन लेटर ऑन आई जॉइंड एज मेंबर प्लानिंग। मेंबर प्लानिंग में मैंने वही जो मेरी थी सोच के कभी कोई मौका मिले तो मैं चीज़ों को ठीक कर सकूँ, देन आई थॉट राइट प्लेस। तो फिर हमने इस पे जितने बाईलाज हैं उनको बड़ा माइन्यूटली देखा, उनका प्रॉब्लम देखे, और सबसे बढ़ के जो हमारी डीवीसी हो रही थी उसकी प्रैक्टिसेस को भी देखा। डीवीसी का फॉर्मेट हमने ऑल टुगेदर चेंज कर दिया उधर। हम डिज़ाइन पे बड़े अच्छे पैनल के साथ बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं, और उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है अभी आपके प्रेजेंटर ने बात की, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, उस पर हम बात करते हैं। फिर जो विंड डायरेक्शन हैं उस पर बात करते हैं, फिर उनके फसाद पे बात करते हैं, और फिर रूम के साइजेस एवरीथिंग वी डिस्कस है। और उसके बाद फिर मटेरियल्स पे भी कभी बात होती है, लेकिन नॉट बिफोर मीटिंग सर। जब सर से बोला था तो एक दफ़ा मटीरियल्स पे बात करनी शुरू कर दी, और लास्ट मंथ हमने हर डीवीसी में अनाउंस किया है कि नो ऑनवर्ड हम हर बिल्डिंग में ECPC अप्लाई कराएंगे, और हमारा कोड जो एनर्जी एफिशिएंसी कोड है 2023 इसको हम अप्लाई करेंगे। अपने आर्किटेक्ट को भी बता रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को देखें तो ECPC 1960 में ही अप्लाई हो गया था। अगर आप इस्लामाबाद का मैप देखें तो इसमें ये डिज़ाइन हुआ हुआ है ग्रिड आयरन पैटर्न। इसमें परपेंडिकुलर कॉरिडोर है, 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का जो सेंटर से वो एक सेक्टर है, और हाफ जो सेक्टर रोड है वो मिनिमम 600 फीट की है। ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू आवर मार्बल रेंज, एक एंगल पे ना ये नॉर्थ के साथ ओरिएंटेड है। मैंने डावलाइटिस जो के प्लानर थे उनकी स्टडीज़ को देखा है, उन्होंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्टडी की, एनवायरमेंटल, उन्होंने हाइड्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरह स्टडी की है, उन्होंने इस इलाके की साइल को बहुत अच्छी तरह स्टडी की है, और टेम्परेचर को एज वेल। तो उन्होंने 2 मेजर कॉरिडोर जिनको हम आजकल श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद हाईवे के नाम से जानते हैं, इसके अलावा भी 2 उन्होंने कॉरिडोर प्लान किए हैं। दे आर 1200 फीट वाइड, और ये जो 2 कॉरिडोर थे ये अराउंड आई है इस्लामाबाद के टेम्परेचर को बाकी शहरों से डिफरेंट रखते हैं। सर गर्मियों में ये जो इस्लामाबाद हाईवे है ये कैरी करता है हमारा नॉर्थ साउथ जो विंड डायरेक्शन है, और लो टेम्परेचर की जो हमारी विंड है उसको साउथ की तरफ लेके आता है, और पिंडी को भी इसका फायदा होता है। इसी तरह ईस्ट वेस्ट में जो है वो, उसके बाद जो डार्जाइटिस ने इसको डिज़ाइन किया था उसमें उन्होंने इसी तरह सेम ग्रेड आयरन पैटर्न को इनसाइड जो हमारे सेक्टर हैं उसमें उन्होंने डिफाइन किया, और उसमें वाइड रोड रखी, प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन प्रपोज की, बड़े बड़े उन्होंने जो है ना वो पार्क्स और प्ले ग्राउंड हर सेक्टर में अवेलेबल है, और अलगी के बाद वो कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी हद तक और काफ़ी देर तक उसने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन 1992 के रेगुलेशन के बाद इस पर जो काम हो गया, लेकिन अब सर मीका के इंटरवेंशन से अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं उस बात पे आए। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है वो भी मुझे गाइड करता है। हमने मुल्तान में वेरी हाई रूफ देखी, लेकिन जब हमने जॉब अपनी गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट की तो जो हमारी CNW डिपार्टमेंट लाहौर की बिल्डिंग अगर किसी ने विजिट की हो तो उसकी वेरी हाई रूफ्स हैं, बड़े ऊंचे लेवल की है, और वो पूरा साल जो है उसमें बहुत सारे मैक्सिमम रूम में एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को आज से 150 साल पहले जब वो बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं थी तो कंसीव किया गया। मुल्तान में जो कंस्ट्रक्शन होती है या सदर्न पंजाब में, वहाँ पे जो ओरिएंटेशन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग के फ्रंट पे जो बरांडाज होते हैं वो आप डिजिटल रोल प्ले करते हैं डिज़ाइन में। तो वो एक्सपीरियंस हमें फिर वहाँ पे जो हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्डिंग देखी हैं तो ये जो 1.5 सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग को भी हमने एक्सपीरियंस किया, तो उनकी ठीक
جو ہے نا والس تھے, اور والس میں جو مٹیریل ایسا تھا جو کہ ہمیں انرجی ایفیشینٹ بلڈنگس کو بنا سکتا. ہم نے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو کاپی کریں, لیکن ہمیں وہاں سے گائیڈنس مل سکتی ہے جو کہ اس میں آپ سے کیسے کرواتا ہوں. ہم نے ابھی جو سر بات کی ہے, ہم جو میں نے کہا وی آر انفورسمنٹ ایجنسی ہے, تو ہم نے جب ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ہم نے پھر اپنے اسٹاف کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے کرنا ہے. تو ہم نے جو ECDC کے جو ریگولیشن ہے وہ نئی جو ہماری بلڈنگز آ رہی ہیں ان میں تو ہم اپلائی کریں گے کریں گے, تو پھر اب اس کا میکنزم ڈیفائن کریں گے کہ ہاؤ ٹو سیٹل آور ڈیزائنرز, ہمارے جو پبلک ہے اس کو اویئرنیس, یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. So, moving on to Samvad Suhail Saab, we also have a participant online. So, in their interest, I'll keep switching between English and Urdu. So, Samvad Saab, normally when we look up to architects, we come to you for design and aesthetics primarily. So, now that energy conservation is becoming a prime concern and is going to be part of regulation also, how do you see the community of architects in general and then your work in particular being influenced by these energy conservation constraints? Does that make your job more difficult or more exciting? I think I'll take it up from what Khalid Saab ne kaha. I would definitely appreciate CDA. I think it's the only agency in the country جو DVC رن کر رہی ہے اور پراپرلی رن کر رہی ہے. I've been a member of the design rating committee also, and so is my father, Suhail Saab. And now ہماری ممبرز اس کا حصہ بھی ہیں, and جس ڈیٹیل سے اب ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے after the ECDC was implemented in a certain manner, so I really appreciate what CD is trying to do. We might not agree with many things that are happening in the city as architects, but again that's a different side there. But اگر ہم ان آرکیٹیکٹس کی بات کریں جو اس ملک میں بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے جو پائنیئرز ہیں آرکیٹیکچر کے اس ملک میں یا اس ملک کو نام دینے میں یا اس ملک کے آرکیٹیکچر کو نام دینے میں, آئی تھنک وہ تو شروع سے ہی سسٹینیبل بلڈنگس پہ کام کر رہے ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں جو بھی اچھا کام پاکستان میں نظر آتا ہے آپ کو, ان بڑے لوگوں کا, ان بڑے مینٹورز کا ہمارے جنہوں نے اس ملک میں بہت اچھی buildings design ki. I think from there onwards, they always looked at insulation as a major element of their design. They always looked at the walls being a certain thickness. If we even talk about brick as a construction material, so the periphery walls, even in our office, I don't remember even once that we designed them at a 13.5 inch wall as a periphery wall. جہاں پر باہر کی طرف 9 انچ اور پھر 4.5 انچ کے اندر دیوار لگائی اور بیچ میں آپ کے پاس جمبل آن کے لیے گلاس وول کے لیے اس کی انسولیشن کی جگہ چھوڑی گئی. اندر پھر 4.5 اور 9 انچ کی دیوار بنائی گئی. سو آٹومیٹکلی آپ کا پورا گھر سیل ہو جاتا ہے. دین وی ٹاک اباؤٹ ونڈوز, آئی مین ڈبل گلیز ونڈوز. ان کے بارے میں ہمیشہ سے جو آرکیٹیکٹس سیریسلی پریکٹس کرتے تھے, they always look at these things. Lighting design was always کہ کتنی لائٹنگ ایکچولی ہونی چاہیے, یا ہم نیچرل لائٹ کورٹ یارڈ سے یا برآمدوں سے یا اسکائی لائٹ سے کیسے لے رہے ہیں. ہم اپنی جیسے خالد صاحب نے کہا پوزیشننگ آف یور رومز, where the living rooms need to be, which are used more, where the semi-private rooms, which are your washrooms, your kitchen, your servant staff areas, وہ کہاں پلیس ہونے چاہیے. ہم یہ بہت دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ بھی اسی ڈیٹیلس ڈیزائن ہو سکتا ہے جس سے آپ ایک کنال کا یا 2 کنال کا گھر ڈیزائن کریں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ CD is trying to implement. And even now if you look at the bylaws that were revised a couple of years ago, and many of us were part of the bylaw revision, یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آپ ایک فٹ پرنٹ ڈیزائن فٹ پرنٹ آپ نے ڈیفائن کر دی ہے, let the architects come up with their own ideas to really make sure that all these parts are done properly. دنیا بھر میں نے ایک چیز سے دیکھا ہے کہ اگر آپ انسولیشن اور ان کرائٹیریاز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کٹس ملتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ چیزیں آئی تھنک دا گورنمنٹ نیڈس ٹو لک ایٹ کہ کس طرح یہ جو ساری بلڈنگ بائی لاز کی انرجی ایفیشنسی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو کیسے ہم لا سکتے ہیں اپنی بلڈنگز میں. اور میں بڑے اوپنلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی SDGs کی,
many architects in the country are not looking at international architects as an example. They've actually devised how they can be done properly in our country. So I think it is how we think, how we look at sustainable materials in the country, and how जो bylaws बनाए जा रहे हैं या उनको implement करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो building bylaws हैं उनको हमें, I think अभी मैं अपने आप को यहाँ देखूँ तो बहुत कम आर्किटेक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं. I think we need to really, at this point, when we talk about collaboration, I think the PEC, of course NICA, and of course PCAT-P and IEP, we all need to be on one table and discuss these things for the way forward, rather than कि ये सिर्फ एक certain area ही हो रहा था. We're all partners in this. हम अपने मुल्क की तरक्की में जो है हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं. And I think this is the first time that we're actually having so many people of the same tiers sitting together and being concerned and taking it forward to the next level. And I think this is high time that all of us sit with NICA, sit with the organizations and CD, of course, being our regulatory authority, being and they've set some great examples. और अगर आप इस कैपिटल की बात करें, दुनिया के पहले 2-3 खूबसूरत शहरों में आता है, क्या हम इस खूबसूरत शहर का, इसके अराउंड जो हमें एक नेचुरल वेजिटेशन मिली है, वो वाहिद मुल्क शहर है जहाँ पे थोड़ी देर मिट्टी पड़ी रह जाती है तो उसमें घास उगाती है. So I think this is the many reasons where जो भी bylaws डेवलप किए गए हैं, वो जब तक आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स मिलकर उनके साथ उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको इम्प्रूव करने के लिए जैसे जो देखा जा रहा है दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, I don't think it can be done independently. I think the collaboration is very important. Thank you. Absolutely spot on. I think energy conservation in buildings is one area where multi-sector collaboration is extremely important for it to actually be enforced effectively. So, Riyaz Beg Saab, so moving to you, building की specially operation के अंदर utilities और बिलखुसूस heating cooling जो है, वो एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है which consumes lot of energy. And we have so many statistics on that. So you really work diligently on this document ECBC. तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त जो एक अमूमी HVAC की फंक्शनिंग और इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस हैं और उसमें यकीनन एनर्जी के एतबार से बहुत से लैप्सेस हैं, तो उसको गोइंग फॉरवर्ड इस फ्रेमवर्क के तनाजुर में कैसे हल किया जा सकता है, और इसमें आपको मेजर चैलेंजेस क्या नज़र आते हैं? बिकॉज लेइंग डाउन डॉक्यूमेंट इज वन थिंग, बट देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज एंटायरली अनदर गेम. तो इसको आप कैसे देखते हैं? Thank you very much, Nika, for inviting me to this panel discussion. Sardar साहब ने अपनी BN highlight की young gentleman जो था उसने sunrise दे दिया ECBC का. और माशाल्लाह glad to know that the member planning himself is a construction engineer. And as far as Sohail is concerned, MEP, I represent the MEP engineers and Sohail represent the architects. So we have very close relation between us. Now, since I was the author of one of the chapter, so I will take a minute to go on the background of this. This document in mid-22, I believe, the government asked NICA to spearhead with updating our old version of Energy Provision, which was done in 2011. And Dr. Saab took this challenge, and Dr. Saab was given a 3-month time period to do that. So he and his team worked very hard. So they approached me and I wrote this HVAC part, and the other professionals wrote the other part. But after that, I wasn't involved at all. Though I have received a draft copy, which I had some concerns on that. But Dr. Saab said, since this is already approved by the cabinet, so let's wait for 3 years and we will update that. So having said that, now since this is the document which is going to be, which is in fact already theoretically implemented, because the SRO has been issued and the gazette has been so now authority having jurisdiction, perhaps CDA, I don't know. So whosoever is the authority to implement this are supposed to follow this so-called Bible. So
I think everybody talks very seriously about energy conservation and energy efficiency, but this book guidelines you, gives you directions what to do. Suhail Saab has said, talking about the insulation, that's very good, but this document tells us that at which wall, what should be the U value, how should be the window percentage toward the overall facade. And in fact, I have made presentation last year them too. Now, building envelope. When we talk about the HVAC efficiency, we start with building envelope, because the building envelope contributes at least 20% of the heat load, thermal heat load which buildings gets into. Now, we had the document in 2011, and the figures were there. Had we implemented that, our buildings, most of the buildings must have been insulated by now. But unfortunately, the document was made, but it wasn't implemented. So making the document is a kind of a baby step, but implementation of this document is a very serious road, Now, there are a lot of buildings being constructed on the new blue area, and I have seen a couple of buildings, and I don't think we got insulated. So this is a point very important to CBA, to make sure that the building envelope as dictated in this book is being followed. So having said that, after the building envelope, then comes the HVAC. It's not only the HVAC which is the energy efficiency is required, it's complete MEP. All mechanical equipment, all electrical equipment, all plumbing equipment, because all contributes to energy efficiency. So the role of MEP engineers is very critical. Now, having said that, at the moment, I haven't seen this document uploaded on your website. I was looking even yesterday, it is not uploaded. Oh, So where is this document now lying? the document is on the website. Sorry, It is on the website. I'll send you a link now, to it. have you seen this document, sir? Now all the professionals, it's my request. Sorry? You have the document. So it's my request that please have a look at the document, because if you don't know what's in the document, how can you forecast your implementation? Yes. Now coming toward precise to your question. The document prescribes or dictates the energy efficiency ratios. In 2011 document, we have referred to ASHRAE 2004 standards. Unfortunately, even that one till today is not being implemented. Now, the new document, Sardar Sahab was kind enough, he asked me to download the latest version and incorporate that into this particular document, which we have done it, but unfortunately I haven't seen the copy. I'm sure Nicholas Staff has done it. So when it comes to equipment, first of all, the air conditioning equipment, we have dictated the coefficient of performance and the energy efficiency ratio. So whosoever designs the building, designs the equipment, must follow that. And once the MEP consultant designs it according to the standard, then the authority having jurisdiction must review it and concur it if it is being followed, yes or no. If it's not being followed, that means we are not going to be energy efficient. So the three things now. Number one, energy efficiency ratios mentioned in this document must be implemented by the MEP engineers. As far as the building envelope is concerned, the Institute of Architects and all the architects are supposed to implement that. And when all these things are together, then the package must go to the authority having jurisdiction,
and they should review it. And if it's not followed, it should go back to the consultant. So, doing all this, we will make sure that we are in the built environment. And the built environment, as I said, it's not only homes only, it's the buildings and other facilities also. So we actually call it as a built environment other than that. So that's about the only thing is I would like to conclude that the code must be followed in its real essence. Thank you. Is actually very serious about implementing CBC as you wrote it. So thank you so much. I just wanted to make that point clear. Okay, so Noin, coming towards you, so you've been working with some well-known vendors for the HVAC, and you've been delivering this in Pakistani market for a while. So you understand, client psyche very well. One thing that we typically see is that for high-end equipment with better energy efficiency ratios, they are also more expensive, and so there's an initial inertia where you don't want to invest too much upfront, while going for such high-end HVACs, but then they have this downside. So how do you see, going forward and with these guidelines now in place, do you foresee that now better ER ratio equipments could actually be implemented in some ways? What could be your distribution strategies on that, or some insights? Okay, thank you very much for this brilliant question. I am sitting with a lot of industry experts or massive seller. So under this scenario, and I'm really thankful to Yusuf for joining me from Dubai. He's the regional MENA head for Clevet. Buildings HVAC के अंदर, क्योंकि मैं Builders and Developers Association के साथ बहुत ही कीली काम करती हूँ. I'm Mehman from Karachi and I'm part of Abad as well. So आबाद में भी हमारी काफ़ी सारी इंटरेक्शन रहती है. जो हमारी टर्न आती है, that means HVAC की, so पैसे मुक चुके होते हैं, in other words, और जब एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, फिर हमें बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट कर्टेल करने के लिए कहा जाता है, we being distributors, and as very nicely mentioned yesterday in a conversation, Beg Saab कहते, this is an import based product. We don't produce it here. So in order to minimize the cost, तो हमें तो यहाँ पे options available होंगे तो हम करेंगे. So options available नहीं हैं. तो जैसे फवाद ने बड़ी अच्छी बात की कि tax rebates हमें मिल जाएं. So high rise अभी बिक ही नहीं रही. अगर blue area के अंदर आप कह रहे हैं, new blue area के अंदर कि buildings बन रही हैं, so जो बना रहे हैं वो तो उनको बहुत सवाब मिल रहा है by the way, because they're trying to comply with the standards and they have certain clients. Actual buyer जब तक उसको खरीदने पहुंच रहा है, the cost is increasing. Let's be very realistic in this perspective. If CDA intervenes, no offense, if CDA intervenes at this stage to the already standing structures, तो जाहिर सी बात है उनकी cost already multiply कर चुकी है. जो 4 साल पहले डिजाइन किया गया था प्रोजेक्ट, वो आज उसकी कॉस्टिंग जो है वो 75% और कुछ केसेस में 120% इंक्रीज कर गई है, which is humongous. So under that scenario, where will the architects make money from? Where will the consultants make money from? And where will we HVAC suppliers, distributors, and our people going to make money? ये एक other than the energy, ठीक है? So under this scenario, it is very important, to the best of my knowledge and understanding, क्योंकि Clevet के हम partners हैं यहाँ पे. So अभी तक तो as per the booklets that we read, so global warming के लिए जो refrigerant इस्तेमाल होते हैं, वो हम उसके अंदर change ले आए हैं. So R32 I believe होता है. So वो add on कर लें तो global warming का थोड़ा सा ratio हमारा कम कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं. We cannot completely eradicate. So under this scenario, what I believe कि हमें overall educate होना as a self-disciplined citizen of the country बनना पड़ेगा. हमें खुद अपनी आदत डालनी होगी lights off करने की.
New Wave comes in with the idea of installing a small device in the inverter splits. क्यों उसको ज़रूरत पड़ी? क्योंकि as a nation, we do not have the tendency to save anything. We are a spendthrift economy के लोग हैं. तो उसने कहा कि 20 मिनट के बाद अगर कोई नहीं होगा तो वो खुद ही ऑटो पे बंद हो जाएगा. There in the market. तो हमें थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल स्टैंडर्ड्स, फवाद से बात हो रही थी बिफोर द पैनल कि अब हम अपने दोस्तों से ही कंपटीशन करने लग गए हैं. छोटी, क्योंकि रोजी रोटी का मसला बन गया है ना थोड़ा सा, हालांकि है नहीं ऐसा है नहीं, ऐसा हम समझना शुरू हो गए because we have started becoming short-sighted. We have to work in collaboration and that is the only way forward. और I would request Dr. Farooq के ज़रूर यूसुफ को 2 minutes या 1 minute दीजिएगा to give his stance on this. Thank you very much. Thank you. I like your prompt response because we talk about ideal things. It's easy to talk about things in meetings and sessions, but we also need to take a very practical view. Going out in the field, how things happen. So we have Yusuf Rashid with us. He is regional sales manager for Clever. Yusuf, thank you for having us. I hope you can hear me. Yes, I can hear you. All right. I can hear you guys very well. Can you guys hear me well? Yes, we can hear you loud and clear. Okay. Yusuf, you just heard the conversation. So, Yes. what would you add to it? Seeing the regional sales, how do you see this? So first of all, I'd like to thank you for the invitation. It's an honor. It's a real pleasure to attend with your panel, with your experts. I believe there's a lot of experts today to discuss the subject of sustainability, green buildings, and the challenges that everyone is facing currently on most of our markets. So I'm handling the regional Middle East region along with Pakistan also. We are very similar. I can say that out of confidence that our markets are very similar. The market demands very high quality, but yet we do not want to pay high first-time costs for the high quality. People are looking for low cost and high quality. As suppliers, I've been in this field now for the past, I'd say, 12 years, 15 years in the HVAC field. Between pivots, I've been with Carrier, with Train. So we have been suffering with this matter. However, technologies that we are currently trying to work on to cope with the market, specifically with Pakistan, the market is currently heading towards inverter technology. It's currently heading towards certifications that are aligning with the EU regulations, with the global regulations in regards to global warming, for the GWP, for the refrigerants. So in Pivot, our main strategies are revolving around those matters. I'd say, if I would summarize what the market needs, so the market requires excellent cooling, low maintenance cost, low electricity bill consumption, and low carbon emissions. In Pivot, we take pride, so all our products that we are currently offering are utilizing the inverter technology. We are trying to lower the cost as much as possible to be able to survive in the market. Competition now is very tough. There's a lot of competitors either from Europe, from the Far East, from Asia, from China. So we are trying to build our products to have the inverter technology to utilize the new refrigerants such as the R32, the R513 for the chillers, the R134. So those are all matters that we as suppliers are trying to cope and handle the requirements in most of the markets, I'd say, and specifically in Pakistan. I'd say the thing that we need in our markets is more
more motivation to go for the better quality, the higher first cost but lower maintenance and lower consumption on the long term. Those products, and I'd say I always tell my customers and my partners, for residential purposes, for commercial, for high-rise buildings, go for the inverter technology, go for the VRF technology, save the space, save the power, save the energy that everyone is using. Try to invest more in the products. The AC does not stop at air conditioning. We currently have tools to mitigate problems and issues before they happen at site and before they happen at home, such as the monitoring and the mitigation tools. You can currently, consultants, contractors, even clients or residents, they can currently monitor that consumption from their own devices, and it's a way to mitigate the high energy consumption in case there is any. So I don't want to, it's obviously a huge topic, but I think you brought in some very interesting, important points. But as we move towards these high-end equipment, Azim Khuza, how does Ministry of Climate Change views this movement towards energy efficient buildings? And as we have just seen that many of these tools are also cost intensive. So do you can we look up to some financing options on the climate finance or some green taxonomy frameworks that your ministry is working on, which can actually help with this transition? Thank you, Bhaji Saab. It's a Ministry of Climate Change because closely engaged when the ECPC was in the development phase. Other than this, it is you can say that NICA, already it was energy conservation, which was the attached department of the Ministry of Climate Change. So Ministry has supported to formulate the ECPC of 2011, which was also recommendatory that and also mandatory to practice the green pathways and how to reduce the impacts of you can say the CO2 and other emissions from building sector, because it building contributes 37 to 40 you can say percentage of the total GHG emissions at global level. So recently Pakistan Green Taxonomy has been published with you can say with the relevant stakeholders, wherein ECPC has been provided two ground approaches by how go for the adaptation years through ECPC and how to reduce the emissions from building sector as well. And already Ministry of Climate Change was engaged through the global, you can say, organizations like UNFCCC, where Ministry has supported to the proponents to submit the CDM projects of the building sector. Now I will add on that NICA and other relevant stakeholders at national and provincial level in formulation of ECPC other than the Green Building Code, which is a total code that from site selection to you can say for living condition, that when the units are being developed, how those buildings are climate resilient and how they contribute to reduce the emissions. Green Building Codes, which has you can say that the total document from site selection and the waste which is generated from buildings and how the water is being used in buildings and how it may be recycled. Those all techniques are given in Green Building Code. Now
At this forum, we are talking only about the energy efficiency, how to go for energy efficiency by adoption of star-rated appliances, and building in how to make the energy efficient building envelope. Other than this, you can say that how go for the adoption and mitigation measures. That green taxonomy, which is providing the strategies and systems that how go for the engagement of those proponents for taking and receiving, you can say, the projects of buildings through green economy. And taking of green economy, because there is stringent and some regulations and labeling are there. If the buildings before their construction, how they will a total plan of the activities which contains buildings, and how they can get the finances through the MDP, you can say, multilateral development banks, World Bank, and green taxonomy, which already recently has been published, and the building sector can get such a useful and financing through green taxonomy. Okay. So if I correctly understood you, if we can do classification effectively, yes, in the buildings, then probably that can lead to some avenues for financing. Yes, of course, because you cannot go for going in 5 Marla house, you cannot go for the. Other than this, I may add on that recently, Ministry last year, carbon finance mechanisms the Ministry has introduced, wherein we have received a project from DH Quetta, which has a bunch of buildings, you can say, they will construct and make them energy efficient before going for construction. And because when you are going for carbon credits, that you have prior to submit the project, you have to give a full plan that how you will make the buildings climate resilient or energy efficient. Right. So when we talk about energy efficiency, I'll just move to you, Dr. Fayaz Ahmed Chaudhary sir. He's the founding member of Lands Energy Institute, MD of NTDC, and Dr. Fayaz has worked a lot towards the insulation of buildings. So Dr. Fayaz, what would you say? जो डिस्कशन अभी हो रही है उसमें इंसुलेशन का एक बड़ा क्रिटिकल रोल है, अगर आप थोड़ा सा बताइए. We can just open it up for comments now. Yeah, and now we are open up for comments. Please feel free to join. Thank you for giving me an opportunity. Actually, how things started, there is a background, why this ECBC code even came into being. So I'd like to share a few statistics with the power sector, because I was at NTDC, then at LUMS. So the reason the country is going through a huge challenge in the power sector is due to buildings. So in winter, our peak demand is about 12,000 megawatts. The same demand in summer goes to 30,000. So this 18,000 megawatt, and to supply that 18,000 megawatt, you need naturally peaking plants, load following plants, the daily variation you have to handle. And in June, when really the temperature is high, you do not have adequate, even your hydro plant is not available. About maybe 60% capability in June. So what do? So should we keep on building plants and keep on supplying that peak? This is one approach. And the country already knows that this is not sustainable. So your capacity payment, which was 275 Arab rupees in 2016, it has gone to 2275 because of those power plants. For what?
کیا پاکستان چھٹی چلے جاتا ہے سردیوں میں؟ نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری, 4 months we do not even cross 12,000. So what is happening in summer? And the other number that everyone should remember. So our energy demand, one is your power demand, which is like 18,000 difference, which dictated us to go, rather we should have gone to this approach, from the very beginning. Now, the second number is your energy demand in a winter month is about 8.5 terawatt hours. Means kilowatt hour, megawatt, or then you go giga, you go tera. And if it is assuming that the country will only see winter, so it means 12 into 8.5 is 102 terawatt hours. So the total business will be 102 terawatt hours if in our country summer never would have come. But the total sales, including summer and winter, total energy use is 127 terawatt hours. So now, 127 minus 102 is 25 terawatt hours. So it means the additional consumption is only 25 terawatt hours in rest of the 8 shoulder and summer months. But you had to provide that peak, and you install to supply that 18,000 megawatt, you install 21,000 because of the variation in the, not every time every plant is available. But that's how our capacity payment grew to this much, and you see what the rate you see on a monthly basis. So everyone in the country, including suppliers of HVAC system, so that the more kind of demand that they see, so their business is flourishing. So they never cared. Okay? Yeah. Now, the people who are planners, means our PEC, either our NTDC, the power system planners, they fail to realize like what's happening to the system, what is happening on the CDA or any other development agency. So they also fail to, because they did not have the overall big picture. وہ ایک بلڈنگ میں I fired 7 HVAC consultants, by the way, from my own house. To whoever I went to, everybody, the ایک کنال کا گھر ہے, yes, 32 سے 35 ٹن لگے. وہ میں نے کہا یار میں نے یہ انرجی ایفیشنٹ گھر بنا رہا ہوں, میں بلڈنگ انویلپ درست کر لیا ہے, still you are asking me to put up that money, air conditioners. So I didn't buy that argument. So that's what initiated basically at LUMS, because as NTDC, when I objected to the government of that time, like we will not put any new plant because this is not sustainable. But when I went to LUMS, so I took this on me that we need to correct things. The sustainable architecture, although I'm not an architect, but I'm an energy guy, and I hired 7 architects at Energy Institute. So I did not hire any grey hair guy. میری تو سویرے لڑائی ہو جانی. The person is going to say to me, میں نے تو 7,000 گھر بنائے, and now you are telling me how to build a house. تو اپنا کام کر جا. So what I did, I hired young people. But that's where our contribution to this TCBC, so building envelope کے جو چیپٹر لکھے ہوئے ہیں وہ لمز انسٹیٹیوٹ نے ایفرٹ کی. ابھی آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھے, کو بچے نے دکھایا بھی, جو
So it's not 20%. So you're building a developer reducing your peak demand to 50%. اور سارا کام ہی اتنے ساری بات ہی بلڈنگ اینڈ ڈیولپ کی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کچھ مثالیں ایسی بنی کہ اونٹ سے اگر چھاننی اتار لو گے کیا اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا. تو آپ کا جو انرجی جو سپلائی سائڈ اس میں اگر آپ ایفیشنسی لے آؤ, یس الیکٹریسٹی کے جو بلب ہے اس میں بہت میجر ایفیشنسی آئی ہے. 60 واٹ کا بلب جس نے جو لیومنس دینے تھے وہ 3 واٹ کا دے رہا. لیکن باقی ابھی جیسے انورٹر ٹیکنالوجی میں ابھی آپ کی وہ پیک آج اس میں بھی کچھ بہتر, لیکن وہ ساری کے ساری اپلائنسز کر لو, پنکھے ٹھیک کر لو, 15 سے 20% آپ لے آئیں گے ایفیشنسی. لیکن میجر آئے گی بلڈنگ اینڈ ڈیولپس. تو اس کے بھی نمبرز میں نے ورک آؤٹ کر لیے ہوئے, تو جہاں آپ لوگوں کو توجہ کرنی ہے, آپ کے ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کا وہ 4 سے 5% نہیں بنے. آپ ٹوٹل بلڈنگ اگر آپ اس میں زمین بھی شامل کرو وہ پروجیکٹ کاسٹ کا حصہ نہیں. لیکن اگر آپ صرف بلڈنگ کی بات کرو تو یس مے بی 7 to 8% میکس, بٹ اٹ ول گیو یو 50% لیس پیک وچ از ہیوج. اور وہ ایک ایک کر کے اس نے پورے ملک کو کرپل کر دیا. Now let me share you another statistics. لمیال صاحب نے یہ جب 30,000 ڈیمانڈ ہوئی 2022 میں, so he put up, ہمارے پاس آپ کو تو PITCF جو پاور انفراسٹرکچر اپنا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری جو کمپنی ہے سارے جو بلز بناتی ہے ڈسکوز کے, انہوں نے اسٹیٹسٹکس اپنے ٹویٹر پہ لگائے. 7% people, domestic connection, 7%. They use 300 kilowatt hours or more on average. Only 7%. Let's say, کیونکہ ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو, ہم نے کہ بھی 200 سے جو نیچے استعمال کرتا ہے وہ غریب آدمی ہے, اس کو سبسڈی ملتی ہے. تو ہم ہر ایک بندے کو ہم نے اپنے ریگولیشنز بھی ایسے رکھے ہیں کہ ہر بندے کو چور بڑھاؤ. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک ہی گھر میں 2-2 میٹر لگ گئے, 3-3 لگ گئے, ایون مسجدوں میں لگے ہوں کہ بھی میں اپنا وہ جو تھریش ہولڈ سے نیچے رہوں. اچھا وہ تو 300 کلو واٹ آورز جن کے زیادہ تھے وہ کتنے لوگ تھے؟ 7%. لیٹس سے وہ 10%. So the 10% of the people, so it means اس سے نیچے والے تو اسی استعمال نہیں کر رہے, ایسے ہی ہے کیونکہ وہ 300 تک بڑھ جائے گا مطلب جو اسی استعمال کر رہا. So what does that mean? کہ 10% people of this nation has crippled rest of the 90%. And we fail to realize this, and we have been doing it for the last 40 plus years. When I was a kid, I know our ancestors, AC ویسے تو 40 سال پہلے ہی ہے نا ملک میں, پہلے تو اس سے نہیں تھے. So what our ancestors did, ان کا یار چھت کو اونچا کر لو, ادھر کھڑکی بنا لو, ہوا لائٹ ہو کے اوپر چلے جائے گی, ایک نیچرل سرکولیشن ہو جائے گی. اچھا کوئی اگر آپ ہوا نہیں بھی چل رہی تو آپ نے ڈفرنس کریٹ کر دیا پریشر, ہوا چلنی شروع ہو گئی. اب ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی عقل آئی, کس نے کہا کہ یار چھتوں پہ انسولیشن لگا, وہ تھوڑا ہیلپ کرے گا. اگر آپ کی کھڑکی ٹھیک نہیں ہے, سائڈ کی دیوار ٹھیک نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سو ٹوٹل ڈیولپ کی ضرورت ہے. اور ابھی جو آپ نے کہا کہ میں نے ابھی گھر بن رہا ہے اس وقت, تو آپ لوگوں کو بلائیں گے انشاءاللہ. وہ میں نے 3 انچ کی انسولیشن سائڈ پہ وال پہ کی ہے, 3 inches, اور 4 inches کی ہے جس پہ 35 کلو گرام جو میٹر کے ڈینسٹی کی ہے. وہ اوپر ڈبل گلیز ونڈوز ہیں. سو ابھی اس پہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہوگا. تو میں نے اپنے گھر کوئی لیب بنا دیا کو دیٹس ویئر. اچھا بھی میں نے اتنا خرچ کر کے مجھے کیا بینیفٹ ہوگا. تو انشاءاللہ پروڈیوس دوز نمبرز.
बट आई इनकरेज एवरीवन, बड़ी पिक्चर पहले ज़हन में हो कि मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मैं, आपका पे बैक पीरियड तो 4 साल है। ये जो इंसुलेशन पे आप बिल्डिंग एनवेलप को आप दुरुस्त कर लेंगे तो ये पे बैक पीरियड तो कुछ भी नहीं, 4 से 5 साल में आपको आ जाएगा। सो इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये कंट्री को क्रिपल कर। सो दैट्स वेयर आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मैं आपका बिजनेस कम करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है, लेकिन वो कंट्री को बहुत गलत जगह पहुंचा दिया। तो अभी हमने करना क्या है कि अपनी बिल्डिंग्स जो एग्जिस्टिंग उस पे भी अगर वो 5 इनकम, मैंने मंगलियाल साहब में गया, CBR अब आजकल चेयरमैन है वो फेडरल FBI में, अभी वो बीच में कनाडा भी आ जाता था, तो वो वहाँ हमारा कनाडा रेवेन्यू एजेंसी ना CRA है, तो वो अच्छा इंसेंटिव प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं भी। लोग जो टैक्स देते हैं उनको कोई टैक्स रिबेट आ जाए, जैसे आपने कहा कि भी आप इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं कहता हूं वो जो मैंने आपको फिर एक और नंबर बताता हूं, 1 मेगावाट 1 मेगावाट कहीं भी लग गया, थर्मल लग गया, क्या थर्मल डिमांड 80% ऑफ योर कंट्रीज डिमांड इज नॉर्थ ऑफ गुड्डू, 80%। आपका बलोचिस्तान और सिंध सिर्फ 20% है। तो इसका मतलब है मैं जितनी वो न्यूक्लियर जहाज मैंने कराची में लगा दिए, उस पावर ने कहाँ आना है? लाहौर, इस्लामाबाद एंड मुल्तान एंड ऑनवर्ड्स, फैसलाबाद, जो बड़ा डिमांड सेंटर है। तो उस पावर ने जब यहां आना है, क्या मतलब है इसका कि मैंने सारी उम्र के लिए लॉसेस बर्दाश्त करूंगा, सारी उम्र जो ट्रांसमिशन आएगी, जो पावर तकरीबन हमारा जो एक थर्मल प्लांट लगा है न्यूक्लियर का, वो तकरीबन $4.5 मिलियन का 1 मेगावाट। जो थर्मल हमारा कोल लगा है वो तकरीबन 1.8-1.9 मिलियन का 1 मेगावाट लगा, तो उसने मेरे घर पहुंचना है। सो व्हाट यू नीड इज $4 मिलियन फॉर 1 मेगावाट, $4 मिलियन फॉर ये कैपिटल। अभी मैं ऑपेक्स की बात नहीं की, अभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किसके लिए? ये जो भी फिक्रा बोला, ये क्योंकि मैं कहती मैं $84 मिलियन का आदमी है, काते वास्ते जी दीवारें ठंडियां कर ली, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू आर डूइंग। पहले हम घर को ओवन बनाते हैं, आप ऊपरी मंजिल पे जरा चले जाएं, वो 4 दिन सांस नहीं आता, छुट्टी चले जाएं। और मेरी जो आपकी दीवार है, हमारे आपकी छत पर बैठे हैं, मेरी जो 9 इंच की दीवार है उसकी R वैल्यू 2 है, मुझे चाहिए 13 से 15 एटलीस्ट। और मेरी टेम्परेचर वेरिएशन यहां की तो कुछ भी नहीं, मैं 5-4 डिग्री, वो भी इक्का दुक्का दिन हो जाते हैं, इस्लामाबाद में भी या लाहौर में भी 45 चला गया, तो 47 चला गया, कभी मुल्तान में या उधर कितना हुआ 45। कनाडा में, बिकॉज आई लिव्ड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, -30 हो जाता है, +40 भी हो जाता है। तो 70 की वेरिएशन, ये हमसे 40 नहीं संभाली जा रही, वहां 70 वेरिएशन, और वहां की आप अगर आप वैल्यू बनाएं, आपकी जो हमारी वहां इंसुलेशन होती है वो 20 से नीचे दीवारों की नहीं होती, ऊपर तो 35 होती, डबल ग्लेज विंडो के अलावा ऑप्शन ही नहीं है जी, ट्रिपल भी है, बिल्कुल से। सो बड़ी थोड़ी सी कास्ट एक्स्ट्रा करके हम फसाड पे, बाहर एलिवेशन पे या बारो आवे ना, बंदा देखता ही जा रहे। ये हम जो तो तमगे लेने के चक्कर में है इस मुल्क में लोग, वो जो इतना जितना एलिवेशन पे पैसा लगाया है ना, दो लोगों को दिखाने के लिए, ओ भाई अगर ला रहा है दीवार चला ला, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कंट्रोल, ठीक है ना जी। आप डब्बे, हमने क्या किया, वो रोशनदान वो अपने सारे हवाईदार के तरीके खत्म किए, डब्बे बनाए हमने, छत नीची, अभी बड़ी मुश्किल से जाके DHA को मतलब मिलता कर करके, कुछ 35 से ऊपर नहीं आप जा सकते,
ٹھیک ہے. اب جا کے انہوں نے 38 کی لاہور کی میں DHA کی بات کر رہا ہوں, میں گیا ان کے پاس 2001 what I said, میں نے کہا جی آپ کریں ایک 5 مرلے کا, ایک 10 مرلے کا, ایک 15 کا, اور یا 1 کنال کا, 2 کنال کے, مجھے 4 پلاٹ میں فری آف کاسٹ میں دنیا سے آرکیٹیکٹ اکٹھے کر لوں. سمپل سے کوشچن ہے کیونکہ CDA اتھارٹی امپلیمنٹنگ ایجنسی بھی موجود ہے, آرکیٹیکٹ بھی, MEP, equipment suppliers as well as the authority of the port. کہ enabling environment, port بن گیا, approve ہو گیا, it has to be implemented. So میں بات کروں گا enabling environment کیا وہ مجھے available ہے as a client or customer. Number 1, کیا architect اور MEP for designing building with building energy codes سرٹیفائڈ موجود ہیں مارکیٹ میں. کیا CDA میں ان ہاؤس اتنی کیپیسٹی ہے ٹو ویریفائی دو ڈیزائن؟ نہیں, تو کب تک وہ ڈیولپ کریں گے؟ کیا نیکا اور CDA مل کے کوئی تھرڈ پارٹی ڈیولپ کریں گے جو کہ ان آرکیٹیکٹس کے ڈیزائن کو اپروو کرے گی؟ بیکاز ایز اے کلائنٹ آئی نیڈ کانفیڈینس. میں ایسے نہیں پیسے لگا دوں گا 2 لاکھ ہو 50 لاکھ ہو. آئی نیڈ ایشورنس کہ میرا جو ڈیزائنر ہے اور آگے جو اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے یا ویٹ کر رہا ہے they are competent enough کہ میری انویسٹمنٹ ضائع نہ کام کرنا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں. CDA میں جو ہے نا انڈر اسٹافنگ ہے اور کیپیبلٹی کا ایشو ہے. لیکن جب ہم نے سب سے ملاقات کی تو سب کے ہمارے ساتھ اٹیچ میں جڑ ہی گئے تو پھر ہم نے اس میں بڑا پراپر ورکنگ کی. اور اس میں جو ہمارا انیشیل سین یہ تھا کہ ہم جو نئی بلڈنگز ہیں اس پہ اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں اور اپنے آرکیٹیکٹس کو, انجینئر کو, ڈیولپرس کو یہ کنوینس کرے کہ نئی بلڈنگ میں کام کرنا ہی کرنا ہے اور اٹس اسینشیل ٹو امپلیمنٹ. اب جو اولڈ بلڈنگ ہے, ابھی بھائی بات کر رہے تھے ریٹرو فٹنگ کی, تو ایز اسٹرکچر انجینئر جب ہم ریٹرو فٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم فراؤنڈنگ اسٹڈی کی بات کرتے ہیں. اور یہ فراؤنڈنگ اسٹڈی اگر ہم انرجی میں جائیں گے تو آپ کو انرجی آڈٹ کی ضرورت ہے. ہر بلڈنگ میں جہاں پہ ہم اولڈ بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو انرجی آڈٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ایز اے اتھارٹی وی انڈرسٹینڈ کہ جب ایک بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس میں ملٹیپل اونرشپ آتی ہے, تھرڈ پارٹی رائٹس آ جاتے ہیں. اب زیادہ تر کیسز میں ایک اونر نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا فردر جو ہے نا ورکنگ اور کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ڈسٹرکٹ بلڈنگ میں ان میں کیسے اپلائی کریں. جن میں اونر ایک ہے ان کے لیے بھی ہم ریگولیشن کو بھی اپنے بہتر کریں گے. انسٹنٹلی ہم نے جو ریگولیشن یہ ہمیں ملے ہیں ہم نے ایز اٹ از اپلائی کیے فار نیو بلڈنگ. تو وی آر انڈر پریپریشن کہ ہم اس کو نیکسٹ جو اولڈ بلڈنگ ہے اس پہ اپلائی کریں اور انرجی آڈٹ کو بھی اب شروع کریں. تو وی آر ورکنگ ہوں گے ساتھ کے ساتھ ان شاء اللہ مل کے ہم کام کریں گے. جی پہلے صاحب. السلام علیکم سر, میرا نام طاہر نعیم بلیانہ. One comment and one question. First is my comment that buildings are all over the world source of energy consumption. All over the world, whether you go to you are in Pakistan, whether you go to USA or even you go to Afghanistan. So buildings are always source of energy conservation, sir. This is one thing. Now my question to especially to NECA people and the young man which gave the presentation, cost of conserved energy. This is the most fundamental thing which you take care of when you are talking about energy conservation. So my question is that while developing this building code, NECA has taken care of this factor, cost of conserved energy. For example, the cost of conserved energy must be less than the cost of energy itself. This is the fundamental thing. So my question, I end with this one, that I'm sure that NECA, while developing this building code, it has taken care of this factor. That's it, sir. This is first, when we say this is the first rule, as we discuss about it before you plan any other intervention. Or I think people got a lot of Nobel prizes around this whole thing and a number of other things. کہ جب آپ $1 انرجی ایفیشنسی پہ لگاتے ہیں تو آپ سیو کر سکتے ہیں $3 سے $5 جو آپ ادروائز
कोई जनरेशन यूनिट प्रोड्यूस करने में लगाते हैं. सो दिस इज़ अ थंब रूल कि 1:3 है. इसमें इस हद तक भी है कि इफ़ वी आर ब्रिंगिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स इनटू से फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करें, एनर्जी एफिशिएंसी में करें, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी इवन एस्पेक्ट है कि $1 invested in renewable energy, for example, that creates 3 to 4 jobs. But $1 invested in energy efficiency, तो employment side पे भी 5 to 6 jobs create करता है. It's not just saving from that side, but also इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि ग्लोबली अगर आप इसको देखें तो SDG 7 goal 7.3 के अंदर I think globally this work has been done and we have already considered it and that's the whole thing. मेरा नहीं याद कि इसको प्रूव करना है किसी भी बिल्डिंग में, it's difficult to do that. Thank you. अच्छा साहब सिद्दीकी, आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान सिविल सोसाइटी एंड द नेशनल मेंबर. मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ ये है कि हमारा अब कंक्लूजन क्या, हमने करना क्या है. देखिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने इनरकॉम के साथ 1985 के साथ जो फर्स्ट कोड के साथ काम कर रहे हैं और जो पहला रिपोर्ट बना था, लेकिन अब मैं ये चाहूँगा ये कि ये कोड जो है हर शक्ल में तमाम आर्किटेक्ट के पास होना चाहिए. फवाद साहब बहुत अच्छे वो हैं, शोएब साहब के साथ हमारी जो डिस्कशन होती है हम इनसे बात करते हैं कि सर ये हमने ये कोड, तो वो कोड है कहाँ, आप हमें ला के दो ताकि हम उसके बेस के ऊपर वो काम करें. तो मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये कि इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, एनर्जी तो है लेकिन हमारी हेल्थ बिल्डिंग का भी आ रहा है. अगर हमारी बिल्डिंग हेल्दी नहीं होगी है, इसका मतलब है कि इसमें प्रॉपरली प्रेशर ट्रीटेड प्रेशर नहीं होगी तो वो हमारी बिल्डिंग क्या है वो अनएफिशिएंट हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए चाहूँगा कि हमारी बिल्डिंग कोड जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए. सेकंड ये कि जितनी भी बिल्डिंग डिज़ाइन हो वो प्रॉपरली आर्किटेक्ट जो अप्रूव्ड आर्किटेक्ट है फ्रॉम द सिटी वो करें, और जो कंडीशन MEP के जो डिज़ाइनर है वो भी जो अप्रूव्ड शुड अप्रूव फ्रॉम द सिटी वो उसको डिज़ाइन करें ताकि हमारे पास प्रॉपरली हमारे पास उसका सोल्यूशन आए. और देन लास्ट चीज़ वही है कि हमें खास तौर पर एयर कंडीशनिंग में हमें एक टेम्परेचर लिमिटेशन जरूर रखनी है कि आपने इस बिल्डिंग को इतने टेम्परेचर पे आपने चलाना है. कमरों में जाए तो यह होते ठंडे होते तो ये क्या दीजिए साफ करता पसंद है, हम तो नहीं, ये पसंद वाली बात नहीं है. ये शुड बी 24 या 26 होना चाहिए, नॉट कि 20 हो. तो ये तो वी आर वेस्टिंग द एनर्जी. तो ये जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हमें इनके ऊपर काम करके ये जो और उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करके हमें इनको जी सर, बहुत आपने ग्रेट पॉइंट किया. जस्ट एक सेकंड और बस आपके क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि डिमांड साइड को कम करना होगा, आपने हमारा थीसिस ये है कि बजाय ये सिर्फ इंसानों पे छोड़ा जाए स्पेशली वर्क प्लेस पे, अब हमारे पास हाई कंप्यूट चिप्स आ गई हैं इंटेलिजेंट, और वो इंटेलिजेंटली इस काम को कर सकती हैं एडेप्टिव वे ताकि आप लोग अपना काम करते हैं. बिकॉज डिलिबरेटली या अनइंटेंशनली ये वेस्ट होता है स्पेशली बड़ी वर्क प्लेसेस पे. और यहाँ पर अब सिस्टम जैसे अवेलेबल है सर कि जो कि ऑटोमेटिकली एयर कंडीशनिंग को इस तरह के यूनिट्स को जो है कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं इंटेलिजेंटली. सर नाम है, मैं रिटायर्ड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से और एनरकॉन के साथ 1996 से काम कर रहा हूँ. पहले बिल्डिंग एनर्जी कोड was very close to my heart. 2010 में जब वो अप्रूव हुआ था, I was the director policy there, and now ECPC. I am convinced कि ये हमें अडॉप्ट करने ही करने हैं. मैं आपको छोटी सी मिसाल से शुरू करता हूँ. एक कहानी है छोटी सी. एक मिनिस्ट्री है, उसकी हमने एनर्जी ऑडिट किया, 54 लाख रुपए उस पर खर्च हुए. जब वो रिपोर्ट आ गई और उसमें रेट्रो फिटिंग करनी थी तो सेक्रेटरी साहब चेंज हो गए और उन्होंने कहा यार अब तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. मैं कन्विंस ज़रूर हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इसकी रेट्रो फिटिंग करने के. तो सरकार में बड़ी लिमिटेशंस होती हैं और हमें सरकारी उसमें देखते हैं. इसके बरक्स धर्मपुरा में मैं जायका के एक्सपर्ट को अपने लेके गया, वो ओवन लगा हुआ था उसके, और मेरे जायका के एक्सपर्ट ने मुझे अंग्रेजी में कहा, वो चिट्टा अनपढ़ था, अरबों का कारोबार कर रहा था, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का. तो मुझे कहना था यार अगर ये अपने बर्नर्स चेंज कर ले, गैस के जो बर्नर्स हैं, तो इसके 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ सेविंग आ जाएगी. आप यकीन कीजिए वो ज़मीन पे बैठ गया, मुझे पंजाबी में कहता है यार इनू दसो कि कितों ये बर्नर मिलने ने, मैं हुणे चेंज करता.
بات یہ کرنے کی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اس کے اکنامکس سے ریلیٹ کرنا ہے. جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا, میڈم میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, کہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ ہم بھوکے ننگے ہو جاتے ہیں, فقیر ہو جاتے ہیں جب بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, تو ہمیں ہر چیز کو اکنامکس سے ریلیٹ کرنا ہے. جب بائرس کوڈ دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنی جو ٹرمز آف ریفرنس بناتے ہیں یا اسپیسیفکیشن بناتے ہیں اور ہم نے بلک میں لینی ہے, تو ہم جو وینڈر ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہماری اسپیسیفکیشن ہے, تم اپنی کاسٹ کو نیچے کرو. اور یہ ہوتا ہے جیسے بلک بائنگز ہوتی ہیں, ڈیفینس میں ہے, بینکس میں ہے, آپ کے جو بڑے بڑے آباد کے جو بڑے بڑے بندے وہاں پہ دے کین کٹ ڈاؤن دی پرائسز, نیچے لا سکتے ہیں, بٹ ناٹ کمپرومائزنگ آن دی کوالٹی اینڈ. اچھا میں نے بھی اپنے گھر کو لیبارٹری کے طور پہ استعمال کیا ہے. میں نے ہر وہ انٹرونشن کی ہے جو میں نے اپنے 25 سال کے اندر کلائمیٹ چینج میں سیکھی ہے. مائی ہاؤس از انرجی ایفیشینٹ, مائی ہاؤس ہیز گاٹ بلو فلیم برنر. میرا 1000 روپے سے گیس کا بل کبھی زیادہ نہیں آتا. کتنے لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ بلو فلیم برنر اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن نہیں لگاتے لوگ. پھر سر آپ فساد کی بات کرتے ہیں, فساد میں جتنا آج کل کالے کالے گھر بنا دیتے ہیں اٹھا کے, جتنا ڈارک کلر ہوگا اتنا ہیٹ کو زیادہ ابزارو کرے گا. ہم جناب اللہ ٹائلیں اور گریفٹی لگا کے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں گھروں کو, اور اس کا سرفیس ایریا بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اندر ابزارپشن زیادہ ہوتی ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی پیسٹل شیڈز. بیریر نے کیا ہوا ہے نا کہ آپ نے کلرس کی وہ نہیں چینج کرنے دیتا اپنے گھروں کی باہر کی فساد کی. اچھا سر, کمنگ ٹو دس ECPC, ایک تو سر سردار صاحب کی اسٹیک ہولڈرز ہمارے کون سے ہیں, پلیئرس ہیں, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کن کے پاس لیگل اتھارٹی ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو انفورس کر سکتے ہیں ECPC کو. آئی ایم کنوینس کی ہونا چاہیے. سر بلڈنگ سائٹ کے اوپر سر ہمیں ڈیولپنگ اتھارٹیز ہے, CTA از ون آف دیم. ڈسکوز ہیں, ڈسکوز چابی ان کے پاس ہے, انہوں نے انرجی کا جو آپ کو لوڈ سینکشن کرنا ہے نا ان کے پاس چابی ہے, آپ کو ان کو آن بورڈ لانا پڑے گا. سر CNW ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈیفینس آرگنائزیشنز ہیں, معذرت کے ساتھ وہاں CDA کی کچھ نہیں چلتی. CDA کی جو ہے نا یہ مرگلہ سے اس طرف والی پہ کوئی بات نہیں چلتی. اسی طرح آپ رباط کی طرف چلے گئے, وہاں پہ جو بڑے بڑی اتھارٹیز بیٹھی ہوئی وہاں CDA کی بالکل نہیں چلتی. I feel sorry about it. ایک اتھارٹی ہونی چاہیے وہ CDA ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی نہیں چلتی. پھر PKT جیسے انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے, اور بینکس ہیں. بینکس کین پلے اے میجر رول. ان کا گرین ان کی لوننگ کے اندر گرین سیکٹر آ گئی ہے, تو ان کو آپ کو سر آن بورڈ لینا پڑے گا, تب جا کے یہ چیزیں یہ کام چلے گا. تو سر یہ میری کمیشن تھی. آئی ہوپ کہ ان چیزوں پہ کام ہو اور وی شوڈ ورک آن اٹ. میں سر آپ کو بتاؤں, میں EIA کے ریویو پینل پہ ہوں. میں ہر میرا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں پہلے بلڈنگ کوڈ تھا کہ اس کی کمپلائنس کو انشور کریں. اب ECDC 2023 ہے, اس کی انشور کریں اس کی کمپلائنس. یہ میرے مسٹ ہے کہ ان کے جو اپروول ایشو ہوگا اس میں یہ لکھا جائے گا. اینڈ سر آپ اس کو لنک کریں اکنامک سے. سر پے بیک پیریڈ 3 سے 4 سال ہے اگر آپ کی انرجی ایفیشنسی میں کام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو میں پہلے اس سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو برا نہ منائیے گا. جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو ایکچولی انویلپ اٹ سیلف ٹیلز اس دیٹ ویئر وی وانٹ ٹو گو. مطلب اگر ایک بچے کو اگر ہم یہ پوچھیں کہ آپ نے بیٹا ڈاکٹر بننا ہے یا آرمی آفیسر بننا ہے, تو ہم اس کو اس انوائرمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو دکھا سکیں کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں کیا کرتا ہے, آرمی آفیسر کیا کر رہا ہے, کہ وکیل کیا کر رہا ہے. تو اس طرح جب آپ کی کوئی سیمینارز ہوتے ہیں, میں 15 سال سے نیکا کے سیمینارز یا یہ ایونٹس اٹینڈ کر رہا ہوں. سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کافی کوشش کی, مگر ابھی تک مجھے بڑی معذرت سے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ڈرائیو ان سے آیا ہوں اور اس بلڈنگ میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں AC بھی چل رہے ہیں, اس میں آرٹیفیشیل لائٹ بھی چل رہی ہے. کم سے کم آپ اس بلڈنگ میں یہ ایونٹ نہ کرتے, اور 15 سال میں کوئی ایسی بلڈنگ بنی ہوتی جو کہ ہم کہہ سکتے کہ یہ دس از
एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग जिसमें CDA का कोई रोल होता है, किसी आर्किटेक्ट का कोई रोल होता है, किसी भी ये ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब बैठे हुए हैं, इनका कोई रोल होता है जो इनको DHA भावलपुर ने कोई इनको नहीं दिया। हमें इस अब एक बच्चे को मैं ला के ये बताऊँ बाहर से कि बेटा अंदर क्या हो रहा है, तो वो हम कहेंगे जी कि ये बड़े सारे टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, बैरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और सारी पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं सारे, और बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि बिजली को कम इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है। और जिस तरह की बिल्डिंग ये पास हुई है, इस बिल्डिंग में इवेंट ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो मुझे जब मैं इस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, और जब मैं ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ जिसमें इतने ACs चल रहे हैं और इतनी लाइटिंग चल रही है, तो इस जगह पे आपको ये इवेंट नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो इवेंट करें वो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ये सारे कोड्स आपके अप्लाइड हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी नीड एंड तो वो इट विल स्पीक इटसेल्फ कि वो बिल्डिंग हो। अब यहाँ पे पेडिस्ट्रियन एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, आपकी लोकेशन ठीक नहीं है। These are all come into your conservation, energy conservation. ठीक है, बिल्कुल सही, it's a valid point. Thank you. Sir, in UAE there is a company called Tableed. I'm sure you must have heard of it. They use water to keep the temperature cool in the building, so that uses very less energy as compared to the electrical grid. मतलब वो supply लेते हैं लेकिन पानी की ducts pass करते हैं building से, तो वो ऐसे systems पाकिस्तान में summer के लिए use किए जा सकते हैं। 1 यूनिट वो fix करेंगे blue area में और सारे sky rises के पास cooling system आ जाएगा। तो please have a look at it. Thank you very much. Thank you. सर की बात करूँगा। पहला तो जैसे अतर साहब ने कहा कि सोल्यूशन क्या होगा, तो चौधरी साहब ने बात की बिल्डिंग एनवेलप की, ठीक है, और इस पे स्पेसिफिकली इन्होंने पैसिव डिज़ाइन की बात की। तो पैसिव डिज़ाइन हमारे पास बिल्डिंग में सदियों से था, ठीक है, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमें दोबारा पैसिव डिज़ाइन की तरफ आना चाहिए। बट अगर हम आज के लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो हम कंफर्ट को 100% पैसिव डिज़ाइन से नहीं अचीव कर सकते, तो एक्टिव सिस्टम्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अब एक्टिव सिस्टम्स अगर मैं 12 घंटे यूज़ करता हूँ तो मेरा वहाँ पे मैंडेट ये होना चाहिए कि इसको कम करूँ, 8 घंटे कर दूँ, 6 घंटे कर दूँ, ठीक है। एंड देन समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ द एडाप्टिव मेजर, ठीक है। एडाप्टिव मेजर में वी हैव टू पुट ऑन द लेयर्स, वी हैव टू रिमूव द लेयर्स टू फील कंफर्टेबल रादर देन एक्चुअली एडजस्टिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ताकि हम उसकी एनर्जी को सही तरीके से वो कर सकें। अच्छा, प्रेजेंटेशन में जम्बोलान की बात की। आई एम सॉरी, जम्बोलान इज नॉट देन ओनली इंसुलेशन, ठीक है, एंड देन वी डोंट हैव द वैलिडेटेड डेटा फॉर द जम्बोलान। फॉर एग्जांपल, आपके बहुत सारे क्लाइमेट में आपकी ह्यूमिडिटी सिंगल डिजिट में चली जाती है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट कोयटा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी आपकी डे टाइम पे 7 पे चली जाती है, 9 पे चली जाती है समर में। अब वहाँ पे जम्बोलान कैसे परफॉर्म करता है? जहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी 80+ चली जाती है, वहाँ पे किस तरह परफॉर्म करता है? लॉन्ग टर्म एनालिसिस हमारे पास नहीं है, 15 साल में किस तरह परफॉर्मेंस होगी, 20 साल में। एंड देन आई ट्राई टू रीच आउट टू देम सो मेनी टाइम्स, दे डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स। वी ओनली टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, ठीक है। हमारे आर्किटेक्ट जो हैं वो बड़ी कन्विंसिंग तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं कि इटालियन टाइल लगा दो, ठीक है, स्पेनिश मार्बल लगा दो। सॉरी, आप उसका एनर्जी या उसका कार्बन फुटप्रिंट भी चेक करें कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। और फिर लाइफ साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं डबल ग्लेज विंडो की, तो आपको क्लाइंट को बताना चाहिए कि अगर आप आर्गान डालेंगे तो आर्गान गैस 5 साल में निकल जाएगी, तो बजाय कि आप आर्गान डबल ग्लेज में डालें, आप उसको एयर से ही टाइट करें, ठीक है, बिकॉज एयर विल बी देयर। अगर एयर कहीं से एग्जिट हो रही है एंड देयर इज अ वैक्यूम, तो एयर दोबारा आ जाएगी, ठीक है। एयर लीकेजेस की बात की चौधरी साहब ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी वांटेड टू डू अ फ्लो डोर टेस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट हमें नहीं मिला। वी वांटेड टू परफॉर्म इट इन कराची,
but finally we just did it based on the simulations rather than doing it in real. Materials की बात कर लेते हैं. अच्छी बात ये है कि नीका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में आ गया. Congratulations to everyone. I think इंडिया के अंदर the Ministry of Energy has developed a list of materials which are the sustainable materials, and then it is an informed decision making for the people that you can go to the website, you can select, and the materials are tested, they are validated. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आपकी ग्लास कंपनीज हैं, they are just manufacturing for market, they don't have statistics. Solar heat gain coefficient पता नहीं है उनको, ठीक है. Low emissivity windows लिखा हुआ है नहीं, ठीक है. That's why we are using the Turkish windows, we are using the Saint-Gobain, ठीक है. तो हमारे पास मटेरियल्स की टेस्टिंग लेबोरेटरी सर्विस, अगर हम इंसुलेशन की भी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ साइकिल एनालिसिस, और दूसरा हमारे पास उनकी डेवलपमेंट के हवाले से काम करने की बड़ी ज़रूरत है. तो आई थिंक समवन फ्रॉम द मिनिस्ट्री शुड टेक द इनिशिएटिव ऑन दिस. एंड देन द इम्प्लीमेंटेशन 2023 मार्च में कोड नोटिफाई हुआ है, और देन वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट कि एक अथॉरिटी हैविंग द जुरिडिक्शन इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट. The first code was 1990. The compliance was to the team and also the panelists, and we'll be moving towards the networking session of high tea, and we'll be having some informal discussions on conservation conversation. So thank you so much.